सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है। आई वेलकम एवरीबडी। सर्वप्रथमम शिबिर गीतम। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। अवधारणम एफर्मेटिव सेंटेंस। अवधारणम एफर्मेटिव सेंटेंस। संस्कृतम अति सरला भाषा। संस्कृतम अति सरला भाषा। संस्कृतम अति मधुरा भाषा। संस्कृतम अति मधुरा भाषा। संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। अहम केवल संस्कृतेन वदामि। अहम केवल संस्कृतेन वदामि। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है। आई वेलकम एवरीबडी। टुडे we are starting with our the second day. Yesterday was the new year for most of our Indian subcontinent. So wishing them happy Gudi Padwa, happy Ugadi to everybody, happy new year to everybody. And with this beautiful day, let us start with Sanskritam. We are all excited, isn't it? I welcome those who have logged in from YouTube as well. So I welcome you also, those who have logged in from YouTube. Today will be the introductory lecture. आज जो हम लेक्चर लेंगे ये एक इंट्रोडक्शन होगा कि हम अगले 12 दिन तक क्या करने वाले हैं. So this is somewhat परिचय सत्र, यानी ये परिचय सेशन है. We are going to understand each other much better way. Another thing is next 12 days, exactly what we are going to do. You all must have received a message that Sanskrit Sambhashanam, 12 days. And there is a big question mark that hangs over. Can I talk within 12 days in Sanskrit? क्या मैं संस्कृत 12 दिनों में बोल पाऊंगा? To an extent, हाँ. Yes. To an extent, yes. And to an extent, no. यानी क्या? नरोवा कुंजोरवा ऐसी कैसी बात हो गई? नहीं, स्पष्ट करूंगा मैं आप लोगों को. I will make it very clear to everybody that exactly I do not know what is the speed at which you will pick up the things. Normally, we come across many people over the period of time that they have gone through earlier learning of Sanskritam. Some must have done it in their school days. Some have done their MA also. Some have done their PhD also. Some have come from other institute as well, organizations as well, to check out in which way Arjun is teaching. I am not teaching anything. So these are the question marks that are there. But yes, we have to first understand what is Sambhashanam, means communication, or rather spoken Sanskritam. What is this module actually? Number one, I'm making it very clear to everybody that we are not going to teach any shlok, no stotra,
No Bhagavad Gita, no Veda, Puran, Upanishad, nothing of that sort. We are here only to talk with each other in Sanskritam. मैं यहाँ पे वेद पुराण या उपनिषद नहीं पढ़ाऊंगा. आप में से काफी लोग होंगे फर्स्ट डे you must have come, many of them must be there who must have come to have a window shopping. Let us see. If it is suitable, I will continue. Otherwise, forget it. Nothing so serious about Sanskritam. But mind it, you have been chosen. Those who are attending this lecture live are chosen people. Not chosen by me, of course. Not chosen by somebody else. It is chosen by Almighty. Let me introduce one thing. Thank you for that heart, those who have given that. My name is Arjun Vyas. I am Dr. Arjun Vyas. I have done my medicine in Ayurveda. Apart from that, there are many engineering courses also I have done. I am a textile engineer for most of my life. Thereafter, I did my PhD also on Osimum. Osimum यानी तुलसी. तुलसी, on तुलसी पे मैंने PhD की थी. और ये सारे मिलाकर I am doing my studies is ongoing. And just recently I have completed my MA in philosophy. तो सारी चीज है, मिक्सचर है. ये गलत आदमी है. काफी लोग मुझे पागल बोलते हैं. मैं हूं पागल. अभी I am not obliging anyone by taking this class free of cost. मैं किसी पे भी कोई भी प्रकार की मेहरबानी नहीं कर रहा हूं कि मैं ये वर्ग आपके लिए निःशुल्क लेकर आया हूं. ये आप लोगों का अधिकार है. आप में से काफी लोग मुझे ये कहेंगे. अभी मैं सबके माइक ऑन करूंगा, लेकिन माइक ऑन करने की कंडीशन है. नंबर 1 कंडीशन इज आप सभी लोग अपना माइक ऑफ रखोगे, क्योंकि हम ग्रुप में पढ़ते हैं. वी आर 100 ऑफ अस टुगेदर. तो केओस और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर ये मुझे महसूस हुआ तो मैं आप लोगों का माइक बंद कर दूंगा. बट दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन. आई एम रियली सॉरी फॉर जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, दोज हु हैव लॉग्ड इन फ्रॉम यूट्यूब. आई एम रियली सॉरी that you will not be able to interact with me, but you have all the opportunity to interact with me. How? I will be telling you. No chats, क्योंकि यहां पे मैं स्टाफ लेके बैठा नहीं हूं. Now something I want to really make complain. हाँ, अगर आप लोग रेडी है कंप्लेन सुनने के लिए. Yesterday I have posted quite a number of videos also. There were messages also. आप लोग मैसेज पूरी तरह पढ़ते नहीं है. Do you not read the message completely? There it has been clearly said that the link will be sent at 8:30, 30 minutes before the session starts. Somebody is giving me message at 7:30. As soon as there is 8:20, there are SMS after message after a message. Where is the link? Where is the link? Where is the link? I request, to learn Sanskritam, you have to develop patience, absolute patience. Everything will be conducted according to timing. Many of us who are here, and those many of them on the YouTube also, which are my old students, means they are repeating the classes. Yes, you can repeat the classes as many times as you want. No questions asked. Yes, that is the benefit. And all are absolutely free of cost. Nishulk. Yes, there is a donation module which will be posted how to donate and what to donate at later time. Because donation is not my ambition. And whatever donation is coming is going for the good cause and not to Arjun Vyas and his family. Never. हम लोगों ने अर्जुन व्यास या उसके परिवार ने संकल्प लिया है कि जो भी मानधन आएगा उसका सत्कर्म होगा, सत्कार्य होगा आप लोगों के on your all behalf. Those who want to donate can donate. Those who don't want to donate, don't donate. There is no compulsion as such. दूसरी बात है,
कि जो भी डोनेशन देगा उनका नाम अनाउंस नहीं करेंगे. वी विल नॉट अनाउंस द नेम. द रीजन इज आई डू नॉट वांट इनइक्वालिटी. हमें दिखावा नहीं करना है प्लीज. ये दिखावा करने का मंच नहीं है. हाँ, पढ़ने का मंच जरूर है. हम पढ़ाई के लिए आए हैं. वी हैव कम विथ सम गुड मोटिव बिहाइंड दिस. So we have to follow that motive. There are very strict rules. In between I may get angry, but that is nothing personal. आपको व्यक्तिगत में कोई हानि नहीं पहुंचा रहा हूं. I respect everybody. But because if you break the discipline in the class, then I will warn you once, twice, thrice, not more than that. Because others get disturbed. दूसरे लोगों को तकलीफ होती है. और मैंने विनंती की थी, जिस नाम से रजिस्टर करोगे उस नाम से आप यहां पे लॉगिन करोगे, ना कि VS123 कुछ नंबर है. अगर कल मुझे ऐसा कोई भी दिखाई दिया जो अपने मोबाइल नाम से लॉगिन किया है, हाँ, VS1814 सैमसंग SMA226B, सैमसंग SM515F, ये क्या है? हु आर दोज पीपल? आप लोगों को अपना नाम रीनेम करना पड़ेगा. यू कैन डू दैट वेरी इजीली ऑन जूम. नहीं आता तो आप यूट्यूब देख सकते हैं, हाउ टू रीनेम इन जूम. बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. बहुत आसान है. तो इसके लिए कृपया करके, द रीजन इज वेरी सिंपल. मुझे हैकिंग नहीं चाहिए. आई डोंट रिस्पेक्ट हैकिंग. और मुझे आप लोगों की सबकी सुरक्षा रखनी है. आई वॉन्ट टू कीप द स्टैंडर्ड ऑफ आवर क्लासेस. सो नो हैकिंग. ओके, दैट्स द रीजन. अननोन नेम्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास विदाउट वार्निंग. आई एम रिपीटिंग, विदाउट इवन वार्निंग आई विल रिमूव देम. और एक बार अगर जूम में मैंने रिमूव कर दिया तो आप जूम दोबारा कभी लॉगिन नहीं कर पाओगे. बिकॉज आई डायरेक्टली रिपोर्ट ऑल्सो. बिकॉज आई डोंट नो, देयर हैज बीन हैपनिंग. ऐसे इंसिडेंसेस अपने क्लास में हुए हैं कि जहां पे हैकिंग हुआ था. एंड सडनली द होल सेशन वाज डिस्टर्ब्ड बाय वेरियस साउंड्स एंड नॉइजेस ऑफ अदर रिलीजन एंड ऑल दिस थिंग्स. I had to shut down and close the meeting. तो प्लीज आप सभी लोगों के लिए अच्छी बात है, because I have to keep the privacy of everybody as well. We respect each other a lot. Now, बहुत सारा भाषण हो गया ना. आपको लगता है कि यार क्यों भाषणबाजी, ये सुनने के लिए नहीं है. But today we are going to understand. We are not going to start our lectures today. Lectures will start tomorrow. That's on Friday. कल से हम शुरू करेंगे. परंतु शनिवार और रविवार के दिन छुट्टी है. हर शनिवार रविवार के दिन छुट्टी होगी. Every Saturday and Sunday will be off. The reason of off, you will not realize this Saturday. You will realize next Saturday. आपको ये छुट्टी क्यों दी गई है उसका अनुमान आपको अभी नहीं पता चलेगा. आपको अगले हफ्ते पता चलेगा, जब आपको सबको होमवर्क करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, आप लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ परिचय विथ ईच अदर. सो आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन. और सवाल पूछने के बाद, आफ्टर आई आस्क द क्वेश्चन, आई विल अनम्यूट एवरीबडी. आप लोग हाथ रेस करेंगे एंड यू कैन आंसर मी. Don't start the mic immediately, please, because then there is a chaos and confusion. I don't want that. So let us keep the standard of this thing. Before that, let me introduce Vedshala has been taking these lectures since last 3 years. Last year, I have received a national award for taking more than 103 lectures during कोविड क्लोज शटडाउन. टोटल जब भी बंद था सब कुछ कोविड के पीरियड में, आई टुक 103 वर्कशॉप्स. यानी 12 दिनों का
And that time it was 2 hours day, each session, 2 hours, 2 घंटे का था, अभी 1.5 घंटे का किया. But during that time, believe me, non-stop I was taking lecture after lecture. Many of them are here even today. They are attending that classes. Many of them are my old students as well. They continuously be connected. You have to connect yourself. आप लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा संस्कृत के साथ. तो आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछूंगा, आई विल नॉट रिएक्ट. सबका उत्तर मैं बाद में दूंगा. यानी आपको प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, लेकिन उसका मैं कोई ये नहीं दूंगा, उत्तर तुरंत नहीं दूंगा. उसके बाद सबके सवाल खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को सबका जवाब दूंगा. I will ask the question now. I will not respond immediately, but after that, I will definitely respond. So first thing I will do is unmute everybody. Number one, please check out that you have muted your mic. Yes, surprising. Everybody has muted their mic. Rupa, Meera, I'm not going to repeat the names. Ajit, Kamli. अगर यही चलते रहेगा तो मैं दोबारा आप लोगों को बंद कर दूंगा. Do you want that? You said to unmute, no? I unmuted you all. I didn't told. मैंने नहीं ये कहा कि आप unmute हो जाइए. मैंने कहा मैं unmute करूंगा आप लोगों को. ठीक है. अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हाथ रेस कीजिएगा और नाम बोलूंगा तभी एक एक करके उत्तर देंगे. Once I ask the question, after that you will raise your hands, and when I announce their name, they will switch on their mic and answer me. Please, okay, so that everybody else also gets the interaction. आप लोग संस्कृत क्यों पढ़ना चाहते हो? Why do you want to study Sanskrit? One more thing, I will once again, last time I am requesting somebody, Subramanyam Kurur, please switch off your mic. No. Subramanyam Kurur, please switch off your mic. देखो अभी माइक वापस ऑन कर दिया. I will remove you, please. I'm sorry. If you don't follow the instructions, I will remove you. I don't want to start my lectures with, losing my patience. Yes. Monica, you will answer me. Unmute yourself, Monica. Yeah. हेलो सर. हाँ, मैं इसलिए संस्कृत सीखना चाहती हूँ क्योंकि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ. मेरा 3rd मंथ अभी स्टार्ट है और मैंने गर्भ संस्कार करके एक है जहाँ पे मैंने तथास्तु में ज्वाइन किया है. तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि अगर आप संस्कृत अच्छे से सीखते हो तो आने वाला बच्चा भी मतलब वो नहीं बोलते कि तोतड़ा, मतलब वो नहीं बोलेगा, वो क्लियर मतलब बोलेगा. और संस्कृत सीखने से क्या होता है कि ये इसमें बोलते हैं ना कि मतलब अपने को गीता वगैरह इसमें पढ़ना रहता है प्रेगनेंसी में. सो दैट मैंने इसीलिए कंपल्सरी संस्कृत सीखना मतलब पसंद किया है क्योंकि मैं जब 10th में थी तब लास्ट मैंने संस्कृत सीखा. तो अभी मुझे संस्कृत का एस भी नहीं आता है. कोई बात नहीं. तो सर मैंने आपसे ज्वाइन किया है एंड थैंक यू सर. शॉर्ट में खत्म कीजिएगा, सभी लोगों को मौका मिले. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. अति उत्तमम. यस, ओम उपाध्याय. नमस्कारम सर. नमस्कारम. जी अर्जुन सर, एक्चुअली मैं संस्कृत इसलिए सीखना चाहता हूँ बिकॉज ये हमारे वर्ल्ड का रूट है. हम अलग अलग फेमस कंट्रीज जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सब जगह संस्कृत पढ़ाई जाती है. तो हम एज ए इंडियंस क्यों नहीं सीखना चाहिए ये? हमें बिल्कुल इसमें महारत हासिल होनी चाहिए संस्कृत सीखने में. एंड हम दुनिया की कोई भी भाषा बोल रहे, हम अलग अलग तरीके से बोलेंगे
बट संस्कृत एक ऐसी भाषा है, दुनिया का कोई भी पर्सन बोलेगा Beautiful, एक ही सुर में बोलेगा। एब्सोल्युटली राइट। ओम Yes, जी, sir. आपको मैं रिक्वेस्ट, एक मिनट, आपका माइक ऑफ कीजिएगा, मेरा आवाज एक हो रहा है। Yes, sir. हाँ, ओम जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि योर इंटेंशन इज एब्सोल्युटली वेरी क्लियर एंड आई सपोर्ट दैट। आप लोग पूछते हैं, मुझे भी एक बार एक इंसिडेंट याद आ रहा है। आई विल कम टू एवरीबॉडी। एक इंसिडेंट याद आ रहा है। एक बार मैं पर्सनलाइज सेशन लेता था बिफोर कोविड। सो ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं ना, दिस नंबर्स आर मच मोर। दिस इज माय 54th, सॉरी, थर्ड वाला तो दोपहर का था। 154 शिविर है ये वर्कशॉप ऑनलाइन, बट देयर वर अदर्स which were offline, which are not counted. So looking at the total database that I have, more than 25,000 is our student capacity. Means up till now we have reached, and many of them have started talking in Sanskritam as well. That's another best point of our session. अभी जैसे ओम जी ने पूछा था कि अंग्रेज लोग, तो मुझे एक ने पूछा कि सर हमारे क्लास में सब सीनियर सिटीजन आते हैं. In our class we generally see senior citizens coming. I said yes, because that was a personalized workshop. So there were people sitting in front of me and I used to give the workshop. So I said yes. Well, when will young people start coming? Well, youngsters, when a person, English man will come wearing suit and tie and everything and with a very high attitude and big advertisements, our youth will form a queue and pay handsome amount to learn Sanskrit from an English person. वो बोले ठीक है, और मैं चले गया. After that I started thinking कि what exactly are the Europeans or the Westerners do that we are not doing? And what we are not doing, we are not making show out of that. That's good part. That is one thing very good. But another thing is, we do not want to pass on our messages that yes, there is a viral. You have to make the message viral that these classes are available. You can learn Sanskritam easily, staying at your home. Social media जिसको कहते हैं, हम नहीं करते. We will not even talk to our family member that I'm good taken up Sanskritam. Why so? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शर्म आती है. Because we are, we are shy. That then he will ask me what is meaning of so and so, what is meaning of so and so. How can I answer? Just tell him, such people, join the class, understand the meaning according to your knowledge. And that's simple way. So going ahead, I will talk in details later on. Yes, Isha. Go on, Isha. नमस्कार सर. नमस्कार. So I am learning Sanskrit because मैंने last 10th में पढ़ा था and that too just for the board exams. And हमारे घर में कभी भी पूजा होती है या कभी हम अपने श्लोक लोक पढ़ते हैं. So I kind of थोड़ा understand what is it, and that's my feeling that मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मुझे वो समझना भी चाहिए. And that is the only force which is driving me to learn more Sanskrit. I can understand some parts, मगर कुछ parts नहीं समझ आता कभी-कभी. खासकर श्लोक जब बहुत ही fast होने लग जाते हैं या वो joint words use करते हैं, right? संस्कृत में संधि, yes. तो कभी तो 10th में हो जाता था, संधि डिसॉल्व हो जाती थी, बट अभी कभी लगता है बोलने में नहीं होता. 10th में भी वो बहुत नॉर्मल संधि है. देयर आर मेनी नॉर्मल संधि होती है, बट जैसे हमारे श्लोक जो होते हैं उनमें कभी-कभी बहुत सारे वर्ड्स संधि लगा के एक वर्ड बना देते हैं. ना, डोंट डू दैट. I will be talking. So that's not a problem. Isha, you have come to the right address. Okay. So let us go ahead. Yes, thank you, Isha. या प्रभाकर महोदय, प्रभाकर ठाकुर. Sir, namaskar. Namaskaram. Actually, I want Sanskrit just to understand Gita, Bhagavad Gita and Ramayana.
which I read, but I want to understand also. Hmm. So that way I want to learn Sanskritam, and it is our original language of entire world. So it will be a good thing to learn, know that language. Our Indian culture is that only. Absolutely. So the main purpose is to understand what I read Bhagavad Gita and Ramayanam. Okay. With my own effort, I want to understand. Yeah. Dhanyawad. Dhanyawad, Mahadev. I am retired banker, sir. So I want to learn. Yeah, definitely. No worries. Yeah, Krish. Yeah, Krish. Namaste, sir. Thank you so much for No. doing this. And I really like your honest and feedback, straightforward. Appreciate that, sir. The reason I want to learn Sanskrit is, all our ancient texts are in Sanskrit, like, any Veda or Upanishad, if you take it. Secondly, that, I heard about, a lot of foreigners started learning about it, and, they are understanding more on our culture and more, our ancient scripts better than us. And I should be the first one to learn about it, right? So I'm being an Indian, I should know, sir. That is one of the main purpose of me to look at it. And I'm looking forward to your session. Thank you, sir. Definitely. Thank you. Thank you. Sheetal? Namo Namah, sir. Namo Namaha. First, thank you so much. आपने इतना अच्छा platform Please. provide किया है. It is not a platform. Basically, हम लोगों को ये language हमने सीखी हुई है school level में. When I was 8, 9, 10. So 96 is somewhere I have completed my 10th, and now my daughter is going to learn Sanskrit. So I thought अगर मैं सीखती हूँ तो मैं उसको अच्छी तरह समझा पाऊंगी. Now she is in 5th, and I am so glad that उसके स्कूल में संस्कृत स्टैंडर्ड 1 से है. So I am really happy कि वो भी अच्छे से सीख ले. She's just sitting next to आपके me. बगल में. Yes, she's sitting. She's very much excited. Absolutely. She's sitting God next to me, sir. God bless her. God so bless this her. is one intention. और ये देव भाषा है. तो हम जैसे मैं यानी देव महाराष्ट्र भाषा में यानी देव जो भाषा में बात करते हैं. संस्कृत, हाँ, उसको देववाणी कहा अरे जाता वो है. देव है, वो आपकी भाषा जानते हैं. हाँ, तो वो तो हमारी उसके लिए संस्कृत मतलब पढ़ने के बेस है. ये सारे मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में से मतलब ये संस्कृत के ही वर्ड्स लिए हुए हैं. सो अगर हमें मौका मिल रहा है तो क्यों ना इसे सीखे और बोलने की कोशिश भी करें, सर. यही इंटेंशन है. बिल्कुल. अति उत्तम. शीतल, मैं आपको जवाब दूंगा. हाँ, आपको नाराज नहीं करूंगा. विशाल, मैं आप सभी लोगों को फर्स्ट नेम से पुकारता हूं. द रीजन इज इन संस्कृत ऑल्सो ये सर लगाना वगैरह इज नॉट राइट. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत में भी इट इज यू आर ऑलवेज कॉल्ड बाय योर फर्स्ट नेम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज योर एज. सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. एंड आई थिंक सो फर्स्ट नेम विल ब्रिंग अस क्लोजर. इट इज नॉट रिगार्डिंग मान सम्मान. मान सम्मान चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टी. If we want to learn something, then we have to bend ourselves. Okay. So yeah, Vishal, go ahead. Hari Om, sir. Hari Om. Hari Om. I actually ironically grew up as an English snob, पर फिर योगा से काफी कुछ जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. And now I realize that our entire civilization in the past is literally encoded in Sanskrit. तो मुझे वैसे पुराण, रामायण, महाभारत तो पढ़ना है, पर उसके साथ साथ फिर आई वांट टू राइट चिल्ड्रंस लिटरेचर इन संस्कृत सो दैट इट बिकम्स मोर एक्सेसिबल टू पीपल टुडे. Wonderful. Wonderful, yeah. Vishal. God bless you. I'm with you. Yeah, Vedshala is with you. Yeah, Roshni. Yes, namaste, sir. Namaste. Hello. हाँ, हेलो माइक टेस्टिंग. हेलो 1 2 4. ओके, सॉरी. नमस्ते. कुछ गड़बड़ है. 3 सुनाई नहीं दे रहा है. 1 2 4 1 2 4. ओके, अभी क्लियर है. Absolutely. Go ahead. नमस्ते सर. नमस्ते. थैंक यू सो मच कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अरे बाप रे, थैंक यू कहना बंद कर दो प्लीज. हाँ. नहीं, हॉनेस्टली स्पीकिंग ये मतलब लाइफ में पहली बार होगा कि जहाँ मैं संस्कृत सीख रही हूँ. बस यही है कि जो हम श्लोक मंत्र पढ़ते हैं उसका हमें मतलब भी समझ में आना चाहिए. और जैसे सब हमारे कलीग्स बता रहे हैं कि इंडिया की हमारी लैंग्वेज होने के बावजूद अगर हम इसे नहीं सीखेंगे तो ये हमारे में खुद एक मतलब एक ऐसी मतलब एक कमी है हमें कि हम इतनी सुंदर जो संस्कृत हमारी भाषा है हम उसको नहीं पहचान पा रहे, हम उसको नहीं सीख पा रहे. Absolutely right. चाहे कोई भी लैंग्वेज सीख ले बट संस्कृत जो है वो हमें आनी बहुत जरूरी है. और आई मीन रियली अप्रिशिएट कि
we have got this opportunity and you have taken these efforts. I mean, I would truly I feel I'm blessed कि हमें ये मौका मिला I है। will explain everybody. I will explain everybody कि how you have come here. आप लोगों को मैं सच बताऊंगा. And you all will be surprised कि सभी लोगों के लिए ये चीज कॉमन है. I will come across. Okay, रोशनी. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you so much. या स्मिता अग्रवाल. या धन्यवाद. स्मिता अग्रवाल. स्मिता अग्रवाल. Namaste ji. Namaste. So I feel Sanskrit is the root of all languages, the mother of all languages, and it is deeply connected to our culture. And somewhere along up till now, I didn't get the opportunity to learn it. And when I found this Vedshala, I was so happy. I told my husband, my son, everyone that, oh, now I'm going to start learning Sanskrit, and they were also quite happy. Ke chalo, अच्छा है. You know, अच्छा at this चलो age also. ऐसा हुआ, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था ना स्मिता? अच्छा हुआ, चलो लगी रहेगी अपने इसमें, ऐसा कुछ नहीं था ना? फिर उनको पहले बिठाना. अस्तु अस्तु अस्तु, उत्तमम उत्तमम उत्तमम. अग्रवाल फैमिली को धन्यवाद कहता हूँ कि स्मिता जी को अलाउ किया आपने. एनीवे, थैंक यू वेरी मच. या हृदय, या धन्यवाद. हृदय. नमो नमः सर. नमो नमः. You are my repeat student. Sir, actually, I'm an Ayurvedic medical student in All India Institute of Ayurveda. Yes. So, in order to learn Charak Samhita, Sushruta Samhita, we need Sanskrit. So, I joined this program, sir. Yes, yes. And very soon we are coming up with another module as well of Charak Samhita. Sir, okay, sir. So, very soon we will be having it. Ati Uttamam. Yeah, what is this? Preer. P-E-H-R. I cannot pronounce. Sorry. Pihir. Pihir. Yes, yes. Yes, go ahead. You had switch on your mic. Go ahead, go ahead. Yeah. Sir, I wanted to learn Sanskrit since I wanted to understand Bhagavad Gita more and it would be easier to learn it. Okay. How old are you, beta? 9 years old. Who is sitting with you? Actually, my bigger sister sitting inside the room. But nobody is attending the lecture with you. No. It was okay. No problem, beta. Continue. Okay. God bless you, beta. Ritika Berry. Ritika. नमो नमः सर. पकड़ी गई. इतने सालों बाद आई वापिस दोबारा. पहले तो पनिशमेंट देने वाला हूं मैं. First of all, thank you so much for this, for sending us the message that you are conducting the. It is regularly happening every month. Maybe I have not seen. वो कहते हैं ना, जब वक्त आता है तभी काम होते हैं. रितिका, मैंने आपका जब भी एप्लीकेशन देखा तभी आई वाज सरप्राइज. मैं बोला अरे रितिका आ गई, क्या बात है. मैं बोला अच्छी बात है. God bless you. I am. Thank you so much, sir. I am the ex-student of Vedshala, and I'm repeating this course. And my reason is, I think earlier when I read Bhagavad Gita, I could not able to get anything. But just attending one session of yours, now I have completed my Ramcharitmanas. I have completed my Bhagavad Gita, and I am interested in more Purans, and also it has helped me a lot. And I guess whoever एक बार किसी ने अटेंड कर लिया ना, उनको रामचरितमानस के बारे में आपने मुझे मैसेज किया था कि सर थैंक यू, आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द श्लोक्स. यस सर, आई एम इनफैक्ट अब हिंदी कहीं जगह पे हिंदी ट्रांसलेशन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एंड आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट श्लोक थैंक्स टू यू. नॉट थैंक्स टू मी. जादू, अर्जुन का जादू है ना, मैजिक है. अपना पीके के जैसा है. पीके में कैसे हाथ पकड़ के हम लोग पूरी लैंग्वेज ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं. जादू. गुरु को फॉलो करो, गुरु आपको सही जगह पहुंचा देते हैं. अरे भाई, मुझे क्यों आश्रम भेजने के पीछे तुली. तो संन्यास लिया हुआ है और आजकल गुरु आश्रम में नहीं रहते हैं. उत्तम उत्तम. धन्यवाद रितिका. यस छाया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू रितिका. यस छाया. सार्थक
छाया सार्थक, सार्थक छाया, या हाँ यस, आपने अभी ऑन किया था, आप ऑन कीजिए। बहुत सारे लोगों को सेम क्वेश्चन होगा, बट इवन देन आई वांट यू ऑल टू स्पीक आउट प्लीज। वी आर एंडिंग हियर बिकॉज देयर आर 12। आफ्टर दिस 12 प्लीज नो मोर रेजिंग द हैंड्स। इसके बाद प्लीज हाथ मत उठाइएगा क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है? या संपदा, संपदा मेहता। Yes, sir. Namo Namah. नमो नमः। I want to learn Sanskrit as everybody is saying that they want to learn the Gita and Upanishads. And I have tried to attend the Sanskrit parikshas also. But it was very difficult to understand the grammar of Sanskrit. And I got an opportunity to learn this course. So I have attended this. Uttama. I want to read more Upanishads. Don't worry. Sampada, I will answer you. Yeah, Vishaka. Thank you. Thank you. Vishaka Nayak. Yes. I'm right. Are you Vishaka Nayak? Vishaka Lele. Nene. Oh, okay. Lele. Eli. Eli. Lele. अरे म्हणजे माधुरी दीक्षित वाली है. माधुरी दीक्षित नेने. एनी. अच्छा लेले. अस्तु. हाँ विशाखा बोला. नमो नमः महोदय. नमो नमः. मी लहानपणापासून खूप स्तोत्र, श्लोक, शुभंकरोती हे सगळं म्हटलं, पण त्याचा अर्थ कुठे माहिती? आपल्या आई वडिलांनी आपल्याला सांगितलं, आपण म्हणतो, पण पुढे माहिती नाही ना त्याचं काही. त्यामुळे या आता इतक्या वर्षांनी मला जाणवलं की आपण जर ते शिकलं आणि त्याचा अर्थ जर समजून घेतला तर आपण लहान मुलांना पण शिकवू शकतो. जसं आपण शिकलो तसं आपण लहान मुलांना शिकवू, म्हणजे त्यांना पण गोडी निर्माण होईल. Absolutely. Wonderful, Vishaka. Wonderful, Vishaka. Wonderful. Wonderful objective you have. Okay, wonderful. आणि एवढं सुंदर शिकवाल तुम्ही, त्याला मला डाऊट नाहीये, परंतु कंटिन्युटी शुड बी देअर. मला जोडून राहायला लागेल. संस्कृत सोपं आहे, परंतु त्याच्याबरोबर संलग्न राहावं लागेल. कारण संस्कृत सामाजिक भाषा नाहीये ना, नाही, म्हणून अवघड जातं लोकांना. अवघड नाहीये, सोपं आहे. मी दाखवील ना तुम्हाला. पाठांतर तर लगेच होतो ना. हो, झटकन होईल. येस. धन्यवाद. धन्यवाद विशाखा. शर्मिष्ठा. नमस्ते सर. नमस्ते. मैं संस्कृत में BA MA किया और नेट भी क्लियर किया. फिर मुझे लगता है कि संस्कृत फ्लुएंटली नहीं आता है, तो कुछ कम ही लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ संस्कृत को फ्लुएंटली बोलना, इसलिए ज्वाइन किया. संभाषणेन विना संस्कृतज्ञ न शोभते. हाँ, इसलिए आपका बहुत आभारी हूँ कि आप ये प्लेटफॉर्म किया है. आभार मत व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि उसका कारण मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? या साइज साहित. हाँ, थैंक यू शर्मिष्ठा. हाँ, ये एस. हाँ, नमो नमः. यस, नमो नमः सर. सर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, और सर हमें संस्कृत है लैंग्वेज फर्स्ट में, तो उसको और अच्छी तरह से जानने के लिए मैंने ये कोर्स लिया है. बिल्कुल. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू. ओके, विवेक. यस, धन्यवाद. नमस्कार. आपने मना किया कि आभार व्यक्त मत करिए, पर जो हृदय से आता है वो आभार नहीं है, वो धन्यवाद होता है. तो वेदशाला आपको धन्यवाद, पहली बात. नहीं. दूसरी बात, संस्कृत में इसलिए सीखना चाहता हूँ कि ये मेरा मानना है कि अधिकतर लैंग्वेज की जननी संस्कृत है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही, ये मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले मैं घूमने पहाड़ों में गया था, तो वहां पे एक मंदिर में मैंने छोटे बच्चों और कुछ विदेशियों को देखा जो संस्कृत में बात कर रहे थे. मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं बोला भाई, लोग संस्कृत सीखने आते हैं इन बच्चों से और हम नहीं सीख पाते हैं. लेकिन आश्चर्य तब हुआ ये जान के कि बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं उन विदेशियों से. वो विदेशी आके यहाँ पर बस गए हैं और गांव के बच्चों को वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं. तो बहुत ग्लानि हुई ये सोच के भी कि भाई हम नहीं सीख पाए उस चीज को, और वो विदेशी आके हमारी भाषा हम ही को सिखा रहे हैं. यस, हमें झूठे खाने की आदत है ना. हाँ, तो हमें झूठा खाने की आदत है.
तो फिर डिसाइड किया कि नहीं भी ये सीखना चाहिए, जब मौका मिलेगा तो जरूर सीखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद विवेक महोदय। यस डॉक्टर जगदीश पटेल। यस डॉक्टर। यस, नमो नमः सर। नमो नमः महोदय। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मेरे आगे जिसको भी पूछा गया वो कह चुके हैं, तो पुनरुक्ति दोष थोड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आयुर्वेद स्नातक हूँ, तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, रस भेषज, ये सारे विषयों को अच्छी तरह से समझने के लिए ये चाहिए। दूसरा एक ये है, अभी मैं अमेरिका कैलिफोर्निया से ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पर ये वर्कशॉप। तो मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, उनके पेरेंट्स चाहते हैं, मतलब मेरे बच्चे चाहते हैं कि उनकी बच्ची को अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है उससे बिल्कुल अच्छी तरह से कनेक्ट रखा जाए। तो हम लोग उसे गुजराती तो सिखा रहे हैं यहाँ यूएस में रहकर, लेकिन साथ साथ ये चाहते हैं कि अगर संस्कृत भी सिखाया जाए तो गुजराती की जो मदर लैंग्वेज है, जहाँ से गुजराती डिराइव हुई है, वो अच्छी तरह से समझी जाए। जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र, उसकी जो स्टोरीज होती है उनके द्वारा भी जो वैल्यूज उनके बीच ये करना चाहते हैं, ये बात है, ये मेरा पर्पस है। बाकी अभी जगदीश महोदय आप आया हूँ आप लोगों के लिए, जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं उनको टाइमिंग की प्रॉब्लम है, तो टाइमिंग के अनुसार मैं सोल्यूशन भी लाया हूँ। वी हैव आल्सो हमेशा नहीं रहता, लेकिन 6 महीने यहाँ रहता हूँ, 6 महीने वहां रहता हूँ, इस तरह से होता है। तो बाकी में नहीं, कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन सबके लिए सोल्यूशन ये है कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर ओटीटी चैनल। ओके, गुड, दैट्स इट वेरी इज गुड। वर्ल्ड्स फर्स्ट Sanskrit OTT channel, where I have posted some of my earlier lectures and all that, and that will be available to everybody, anywhere, any device, whether on TV, whether on your laptop, at your own time. बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये आपने जो समय दिया उस समय के लिए मुझे यहाँ एडजस्ट इसलिए करना पड़ता है, 12.5 घंटे डिफरेंस है, तो इस तरह से। लेकिन अगर हमारी चाह है तो ये हो सकता है। दूसरा हमारा लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, कुमार संभवम, अभिज्ञान, शांकुतलम, अगर सही मायने में समझना है तो मुझे लगता है कि संस्कृत के सिवा और कोई अच्छा रास्ता हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अति उत्तमम डॉक्टर साहब, धन्यवाद। मैं आपको उत्तर दूंगा। रूपा जी, रूपा। हेलो हेलो, हाँ यार रूपा। हेलो हेलो, आई कैन हियर यू बेटा। ओके, मुझे संस्कृत इसलिए सीखना था कि एक लैंग्वेज, मतलब मुझे ऐसे बोलना है, काफी सालों से बोलना था कि बोलते हैं तो कैसा फील होता है। बस वो फीलिंग के लिए ही मैंने ज्वाइन किया है। मुझे और मतलब मैं इतना भगवत गीता वगैरह पढ़ नहीं सकती हूँ, मतलब, लेकिन मुझे बोलना है, बस बोलना सीखना है। एब्सोल्युटली। अभी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा क्योंकि अन्य लोग भी हैं। प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज। लेकिन ड्यूरिंग द सेशन हम बोलते रहेंगे एक दूसरे से, डोंट वरी, हम बहुत बातचीत करेंगे। मैं बहुत बकबक करता हूँ। हाँ, मेरे दोस्त लोग मुझे बसंती कहते हैं, शोले की बसंती है, ये बकबक करने की आदत है इसे। अस्तु। हाँ, धनश्री बोला। Yes. Namaskar, Guruji. नमस्कार। Yeah. Just one simple reason is that I have a 3.5-year-old kid, and since his birth, I wanted to learn Sanskrit, but somehow I couldn't. I mean, just 2 words, atra agachati, that's all. Other than that, I couldn't do anything because of my lectures and all. So I thought, like, this is the best opportunity, and since he's small, he'll be able to grasp well. So मैंने सोचा चलो बढ़िया है। Dhanashree, your foundation is very strong. You can build a beautiful building over it. Oh my God! Thank you so much. Thank you so much. God bless you. God bless you. You will enjoy. Yes, Dr. Shruti. Yes, Dr. Shruti. नमस्ते। नमस्कारम। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और संस्कृत मुझे समझ में आता है, पर संभाषण नहीं आता ठीक से।
तो इसलिए ज्वाइन किया। और मेरे बेटे के स्कूल में भी संस्कृत है और वो बहुत अच्छे तरीके से सभी ये श्लोक का सभी बहुत अच्छी तरह से प्रोनाउंस करता है। उत्तम। तो संस्कृत में ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग। और एक और बात है कि हम भारतीय ऐसे संस्कृत को संस्कृत नहीं कहते, जैसे संस्कृत ऐसे सब कहते, तो बहुत ही गुस्सा आता है। भाषा की शुद्धता बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उत्तर दूंगा आपको। धन्यवाद। या ऋषभ पंड्या, ऋषभ पंड्या। हाँ जी, जल्दी बोलिए। सर आप पूछते कि इसको आपको संस्कृत क्यों सीखनी है, तो वो आंसर कर सकता है, उसको संस्कृत बोल क्यों सीखनी है। क्योंकि मुझे थोड़े से गीता के श्लोक भी आते हैं और स्कूल में जब भी होता है ना, तब टीचर्स मुझे कहते हैं कि तू श्लोक बोलना। मम्मी ने बताया बेटा, मुझे मम्मी ने बात की मुझसे, बोले वो चाहिए। हाँ, पढ़ोगे बेटा, गॉड ब्लेस यू, आप जरूर पढ़ोगे। हाँ, પણ તમે સાથે રહેજો એમની સાથે. હા ચોક્કસ. તો જ એને સમજાવી શકશો ને તમે. અને એને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલા માટે જ મને વધારે હતું કે એ શીખે. એની સાથે તમે પણ શીખશો તો તમે વાતો કરી શકો ને એકબીજા સાથે. ઉત્તમ. યા हितेशी. या हितेशी. Yes sir. Sir namaskaram. Namaskaram. Sir, I want to learn Sanskrit because I want to read Ramcharitmanas. I want to know about them. That's why I want to learn Sanskrit. Okay, uttamam, uttamam, uttamam. Thank Yeah, you. Anaga. Anaga. नमस्कार सर. नमस्कार. सर स्कूलिंग पर्यंत मी शिकली आहे संस्कृत थोडं. सो आता खूप दिवसानंतर असं वाटलं की आपला गॅप खूप पडलाय आणि मेन रिझन हे आहे की मला जुन्या हिस्ट्री मध्ये आणि लिटरेचर मध्ये खूप इंटरेस्ट आहे. बट असं कुठेतरी वाटतं की कालानुरूप खूप ऍडिशन्स आणि डायल्युशन झालं आपल्या लिटरेचर मध्ये. सो जे ओरिजिनल आहे ते सगळं संस्कृत मध्ये आहे आणि त्याच्यात रस आहे मला खूप. सो असं वाटलं की आपण संस्कृत शिकायला हवं. ओके, अनगा, आय विल आन्सर यू. थँक्यू. या अभय. अभय. Yes, sir. Good evening. Good evening. Yes, Abhay. I have twins. Yeah. In ABM, and they've gone into first standard, and they're starting to learn Sanskrit. और अगर घर पे भी वो भाषा इस्तेमाल की जाए और बोली जाए तो बच्चे उसकी ग्रिप और मजबूती से पकड़ सकते हैं. बिल्कुल. So I wanted to learn Sanskrit since quite some time. I guess this was one trigger which made me join today. Thank you very much, Abhay. I will answer you. Yeah, Om. Om. हाँ नमस्कारम सर. नमस्कारम. हाँ. हाँ सर, मैं अभी स्कूल स्टूडेंट ही हूँ, अभी 9th स्टँडर्ड में हूँ. मी आता स्कूल स्टुडंट आहे, 9th स्टँडर्ड मध्ये आहे. हाँ, चालेल, मराठीत बोलले तरी चालेल. हाँ हाँ, मला संस्कृत मध्ये संवाद म्हणजे मला संस्कृत शिकण्याची खूप इच्छा आहे. मला आता भगवद्गीतेचे 18 अध्याय आणि खूप सारे स्तोत्र पण कंठस्थ आहेत, पण मला त्याचा अर्थ जाणून घ्यायची इच्छा आहे. आणि मला माझ्या घरी खूप स्वामीजी पण येऊन गेलेले आहेत, मला त्यांच्याशी संस्कृत मध्ये संवाद साधण्याची इच्छा आहे, त्यामुळे मी संस्कृत साठी फॉर्म भरलेला आहे. नक्की नक्की नक्की. या सुचित्रा. फास्ट. हाँ, पीठ. सुचित्रा. स्वारी राजन. Namaskar, sir. Namaskaram. I am from Tamil Nadu. The past 50 years, we didn't allow to read either Hindi or. Absolutely, yeah. So we are very cursed. I'm now started reading Bhagavad Gita. I want to know the divine Bhasha, Sanskrit. But are you aware about Devanagari? Can you read Devanagari? To some extent, I read, sir. Alphabets I know. Okay, fine. I will answer there. Okay. Okay. Yeah, Niranjan, please up mic off कीजिएगा. I will answer you. Yeah, Saurabh. नमस्कार, प्रणाम सर. నమస్కారం. ఎట్లా ఉన్నావు? చాలా బాగున్నాను సార్, చాలా సార్. मुझे संस्कृत पढ़ने के लिए इसलिए इच्छा है
क्योंकि जैसे मनुष्य जीवन जब मिलता है तो हम पर कई तरह के ऋण होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अगर संस्कृत भाषा सीखकर अपने पूर्वजों की जो भाषा है, तो मैं एक पितृ ऋण जिसे कहते हैं, मैं उससे कुछ लेवल पे शायद कुछ लेवल मुक्त हूँ। और उसके अलावा सबसे मेन, जब मुझे अपने हिंदू होने का गर्व है, तो जो हमारी प्राचीन जो भाषा है, सनातन परंपरा की जो भाषा है, वो मुझे कम से कम बेसिक आनी चाहिए। ये मेरा इच्छा थी और आपके माध्यम से मुझे वो मिला। अति और उत्तम। वेदशाला के माध्यम से यह यज्ञ पूरा करने का मुझे अवसर वेदशाला से मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी। अति उत्तम, अति उत्तम। ये पुष्पा जी, आपका माइक क्यों बार बार ऑन हो रहा है? हाँ, मुझे तकलीफ हो रही है मैडम। अस्तु, अभी सुचित्रा, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं या मैं आगे बढ़ूं? आप ही अकेले बाकी हैं। हाँ, बोलिए। त्यामुळे मला ते जाणून घ्यायचं की कुठे नक्की काय कुठे कुठची विभक्ती लागते हे जाणून घ्यायचंय, म्हणून मी ते मग ते आधी जुनं फर्निचर बाहेर काढावं लागेल, मग नवीन फर्निचर आत बसणार। अस्तु, मैं बात करूंगा आपको। अभी धन्यवाद आप सभी लोगों के फीडबैक के लिए। नाउ आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ आवर ग्रुप, means majority of them what exactly they want and how exactly are we going to move. Number one is try to understand one thing. आप सभी लोग समझ लीजिएगा कि वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, रामायणम, ये बहुत अगले लेवल का है। इट इज नेक्स्ट लेवल। श्लोक, यस, ज्यादा करके जितने भी श्लोक है वो सामान्य भाषा से बनते हैं। मीन्स वॉट एवर श्लोक्स कैटेगरी दे कम, दैट श्लोका मीन्स डेली श्लोक्स एंड ऑल दैट, दे फॉल अंडर संभाषण ग्रुप। मीन्स मेनी ऑफ द वर्ड्स आर संभाषण ग्रुप, but not above that. Stotra, Veda, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, they are the extensive form of the grammar. So how did you learn your mother tongue? आप आपकी मातृभाषा किस तरह पढ़े? क्या आपके घर के कोई बड़े व्यक्ति आपके सामने कोई लिटरेचर या कोई ये साहित्य लेके बैठे थे, या आहिस्ता आहिस्ता बोलते सुनते 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 आपको भाषा सीख लिए? सो टिल द टाइम when you were a child, did you all ever realize that only by talking normally, as a child you picked up your mother tongue? But the problem is, whenever we say Sanskrit or Sanskrit, both are the right pronunciation. Whenever we say Sanskrit, first thing comes in our mind is it is a language of Ved, Puran, Upanishad, Stotram. Why? It is not the language of text. It is a beautiful language when you talk. When you talk in that language, जब भी आप वो संस्कृत में बात करते हैं ना, उसका अनोखा अलग सा रूप आता है। संस्कृत भाषा नहीं है। It is not a language. It is the way of living. संस्कृत एक भाषा नहीं है, ये एक अपने आप में एक संस्कृति है। तो जब संस्कृत आप लिखते हैं SANSKRIT, उसमें अपने आप को डाल दीजिए, लास्ट में आई लगाइए, तो बन जाती है संस्कृति। दैट मीन्स कल्चर। सो इट वॉज सो डिफाइंड वेरी सिस्टमैटिकली दैट इट केम आउट टू बी एन अरिथमेटिक लैंग्वेज। यानी जितने स्कूल के बच्चे हैं, दोज हु आर इन स्कूल, they have their target 100 out of 100. Yes, it is possible in Sanskrit. None other language in the world can give you 100 out of 100. Even a Maharashtrian sitting for his exam in Marathi, he will not secure 100 out of 100. अगर एक गुजराती, अगर he sits for his गुजराती पेपर, अगर गुजराती में वो लिख रहा है, तो भी उसे 100 में से 100 मार्क नहीं मिलते, मળી જ ના શકે એને। Similarly, all other mother tongue also, even in English. But then, why so in Sanskrit?
Because it is a logical language. It is an arithmetic language. 2 plus 2 is equal to 4. Absolutely clear. No doubt. Anybody has a doubt? 2 plus 2 is equal to 4. हाँ, 2 और 2 5 होते हैं. That was a film. That was a movie. लेकिन 2 और 2 4 ही होते हैं. अगर आप चांद पे चले जाओ, if you go on the moon and if you say here the gravitational force is less than Earth, so here 2 plus 2 is equal to 3. Is it possible? Or you go to Mars and you say कि नहीं, here that is something else, so here 2 plus 2 is equal to 2. संभव है क्या? नहीं, क्योंकि arithmetic is very systematic. और arithmetic or logic, another aspect where it is systematic. But nobody actually took the pain to explain you, everybody, Sanskrit in a real and a right format. There are institutes and associations and organizations which they say Sanskritena Sanskritam Pathayatu. Teach Sanskrit in Sanskrit language. Yes, I agree. It should be taught in that language. But before that, answer one question. Is Sanskrit today a social language? Till now, no. So we have to take the support of other languages. English, Hindi, Marathi, or the regional language, we have to take that support. Why we are taking that support is to understand a particular one. Once our society is Mukhe Mukhe Sanskritam, which is our mission, and once we reach that mission of Mukhe Mukhe Sanskritam, then Sanskritena Sanskritam Pathayatu Uttamam. But here we find that there are many scholars in Sanskritam. There are few departmental heads also, Sanskrit departmental heads in various universities who I came across, and they were unable to talk in Sanskrit. They were talking with me either in English or in Hindi. Just a moment, just a second, I will have a glass of water. I am really sorry. So, Sanskritena Sanskritam Pathayatu, during that time, yes, it is right. It is absolutely right. But here I have come across many universities, the head of the department of Sanskrit, unable to talk in Sanskrit. Why so? Why so? So, are we on the right track? No. Now, how many of y'all will believe that just 300 years ago, 350 years ago, the total Indian peninsula, means total Indian subcontinent, total Indian, starting from Afghanistan till Indonesia and up till Mongolia, they were Sanskrit was the common language and it was spoken language. Yes, there are, viral videos that there is one village in Karnataka that is totally Sanskrit Sambhashit. But then, mind it, there are 14 other villages. 14 other villages with generations together, they are talking only in Sanskritam. And how many of y'all will believe that 4 of these such villages are in Rajasthan? But because of social media, ठीक है, कोई बात नहीं. At least there is a jagruti. At least there is an awareness that is going on. When we are expecting a foreigner to come here and teach you Sanskritam, one of our said, he was surprised why a foreigner should teach us Sanskritam. Mind it, when Madurai temple, the architecture of the Madurai temple was under construction, during the same time, Western world used to hunt and eat raw meat like an animal. They didn't even have sense about how to eat and what to eat. And we were excelling. हम हमारी परंपरा से आगे निकल गए थे और मदुराई जैसा भव्य मंदिर और महल बनाते थे, और उस समय पश्चिमी देश शिकार करके खाना खाते थे जानवरों की तरह.
और आज हम अपेक्षा करते हैं कि वो आके हमें संस्कृत पढ़ाए, जिनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, द मोस्ट इलॉजिकल लैंग्वेज। अरे साइकोलॉजी में मुझे साइकिल का स्पेलिंग CYCLE कभी दिखता ही नहीं है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, व्हाई इट स्टार्ट्स विद PHY? अगर PHY से साइकोलॉजी स्टार्ट होती है तो साइकिल का स्पेलिंग क्यों CY से शुरू होता है? काफी लोग कहते हैं, बट इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। व्हाई? बिकॉज सिंस लास्ट 3 generations हमारे दिमाग में इंग्लिश कूटा गया है। None of our senior parents would like to admit their children into vernacular or mother tongue schools, but they excel. If they learn Sanskrit, the schooling is done in their own mother tongue medium, they excel in their studies. That's the reason you find so many engineers, software engineers and all that from Tamil Nadu, Andhra Pradesh, from the Dakshin Bharat. Why so? Percentage is high. I don't say that North India does not have, but the simple logic is they generally prefer to teach their, means they undergo the schooling, and most of the software engineers are coming from the village background where they do not have English medium schools, and even now they are ruling the Silicon Valley. जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है, जो इंटरनेट की दुनिया है, वो आज भी उनके कंट्रोल में है। मान लीजिएगा गूगल भी आपको सही आंसर नहीं देगा as far as Sanskrit is concerned, because they don't want to. They will confuse you. So one request is, for next till the workshop ends, मैं 12 दिन कह रहा हूं, there are chances that we may extend 2 or 3 days. Please be prepared for that. I will not end till we complete our syllabus. I will not end. Secondly, during that time, you will realize, yes, such an illogical language, and we started accepting it because it was forced into us. हमारे में कूटा गया था. So our earlier generation are responsible for bringing down the Sanskrit. Not Mughal and not Britishers. Mughal or Britishers or Portuguese, उन लोगों को blame मत करो. They are not to be blamed. The reason is simple, because they came here to disturb you and they fulfilled their objective. But we sacrificed the whole thing, a wonderful and a beautiful aspect. And even today, whatever taught in the school is what level? The children are unable to talk in Sanskritam. And there are many organizations who start mugging up the slokas. Hare, mugging up the sloka? Sanskrit is such a beautiful language. It will, from tomorrow onwards, you will realize that. The Ucharan, the pronunciation, what are the, and I'm going to take science classes. यानी जो कुछ भी है, it is authenticated. I have done the test. Regarding my background, I have learned Sanskrit, my first interaction with Sanskrit as a language. Shloks and all that during my childhood, yes, I used to. I have come from the convent medium. मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हूं. वहां पे फ्रेंच दूसरी भाषा थी, संस्कृत नहीं थी. तो मेरा पहला परिचय संस्कृत के साथ, my first interaction with Sanskrit as a language was on 2nd of February 2016. I went through many of the lectures. I did not understand a single word. एक भी शब्द समझ में नहीं आया. संस्कृतेन संस्कृतम पाठयतु अह उत्तमम. But what about me, the person who does not know Devanagari? How are you going to convince me about the importance of Sanskritam? Am I right or wrong? Most of y'all must have undergone that phrase in their life. There are some region in India where they do not accept Hindi, they do not accept any other language. Everything is in their local regional language. But as a result, you are cutting off those people from the rest of the world. They are learning Sanskritam in their own language, written in their own language.
How can you have the feeling of that pronunciation? So whenever they pronounce any stotram or any shlok, you can immediately recognize okay, what is the region from which he is coming from. Tomorrow, the first thing, आप लोग सब लोग तुरंत log in कीजिएगा because there is a video that will be shown. And on that basis, we are going to study ahead. There are 2 videos that will be shared, one after another. तो वो वीडियो के आधार पर हम तय करेंगे कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं या नहीं. तो 2016 दिसंबर तक I did not understand a single word. Not even gachati I was unable to understand, attending so many workshops also. Because being into a science student, being an engineering student, I am also a commerce student. So totally, I am actually speaking, I don't praise, मैं अपना कॉलर ऊपर नहीं कर रहा हूं, but माँ सरस्वती के आशीर्वाद है कि I was very comfortable in my studies. So studies is not a problem for me. In education, yes, I had excelled. In one of my MCOM subject, I stood second in the university, Bombay University. Don't ask how many appeared, because there were only 2 people who appeared for that subject. So I stood second. So hakikat mein dekhne jaye to it was last. Lekin I proudly say. But apart from that, I am good in studies. Then why I was unable to understand this particular language? But during December 2016, I lost my mother also. So I was quite in different state of mind and all that. A bit of depression, what we call it. And suddenly my wife motivated me and she said, why don't you study according to your way of learning? Then it sparked me. Learning a logical language, I have to understand the logic behind everything. Learning a scientific language, I have to learn the science behind it. So the major science is the activity, the action of your brain, the response of your brain. आपके मस्तिष्क की जो गतिविधि रहती है एक नई भाषा सीखने में क्या होती है उस पे मैंने अध्ययन शुरू किया. I started doing my studies into the subject how your brain operates in language learning. I went through a hardship. Means एक वीक तक मैंने पूरा वेस्ट किया and thereafter I came across a university which is in Australia. ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी है जो ब्रेन पे, that university does research on the brain, यानी हमारे मस्तिष्क पे वो रिसर्च करते हैं, वो शोध करते हैं. और उनके चंद पेपर देखिए, मां सरस्वती के आशीर्वाद, चंद पेपर मेरे हाथ में लग गए. हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज एंड व्हाट इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द ब्रेन इनटू लर्निंग अ लैंग्वेज. It was in January 2017. I started. By 21st of May 2017, I qualified as a teacher, even Astadhyay, Panini Sutrani, everything by heart. All the 1500 shlokas by heart, with knowing the meaning. Because I used that particular logic. So if you say, is it possible for me to start talking in Sanskrit within 12 days? Yes. To an extent, yes. But then, don't give pressure on your brain. आपके दिमाग पे बहुत जोर मत दो. Let your brain work as it is. I have a bad habit. I work whenever I'm sleeping also, I'm working. I start dreaming about my work. तो वो आदत सी हो गई है. Can't help it. And here I am, who has already completed more than 25,000 students and many lectures, many workshops. I have taken workshops in midnight. एक कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर वाले ने मुझे कांटेक्ट किया, बोले कि वी वांट आवर टोटल, मींस द ओनर ऑफ द कॉल सेंटर वाज लर्निंग विथ मी इन दैट पर्सनलाइज्ड, personalized shibir that people sit there and learn.
They used to come there. And he suddenly said, "Ke my rest of the staff members, they want to learn Sanskritam. But there is a problem about timing. Because it is a call center and they have an international tie-up. So the timings are very odd. So only time in between was 1:30 to 6:30 in the morning." I said, "No problem." I started the lecture exactly at 2 o'clock till 5 o'clock. 2 बजे से 5 बजे तक. And during the daytime, there were 2 lectures again. 2 lectures attend करके, my personal profession को attend करके, I used to take midnight batch, and thereafter वहां पे 5 बजे खत्म हो जाता था. 6 o'clock I used to take another lecture. 6:30 rather. 6:30 I used to take another lecture in a temple where there were senior citizens coming. There was Ayyappa temple, and in that Ayyappa temple I used to take another 1.5 hour lecture, and that went on till more than 9 months. Continuous. Nirantar. Or as on today, that call center has written a board on their front door, Sanskrit Sambhashit Karyalayah. And they talk between them only in Sanskrit. It has happened. They have worked hard. So it is actually y'all are working hard. So what I am doing, am I teaching y'all Sanskritam? No. Now, answering majority of the questions. Everybody are thanking Arjun. Arjun, thank you. Thank you for this platform. Thank you for this. Thank you for that. Why so? Why should I be thanked for what I have not done? Actually, when I was, taking personalized lectures, there, the students are sitting in front of you. आपके सामने लोग बैठे हैं संभाषण में, तो आप जो भी बोलते हैं तो उनके चेहरे पे उनका रिएक्शन दिखता है. You can see the reaction on their face. So accordingly, it is done. But online, it is something like you are standing in front of a mirror and continuously talking, irrespective of what is your reaction. So it is a difficult task. It becomes really difficult. So my wife said, "Ki COVID has started, lockdown and everything has started. Why don't you try online?" I am tech savvy. So even my whole family is quite tech savvy. So why don't you start online? I said, "No, yeah, no, but I don't have that much of confidence because I need that response." Arjun, try it out. No, I can't. I said, "I can't." What she replied, उन्होंने क्या जवाब दिया मेरी वाइफ ने? वो बोले कि वो अर्जुन के साथ एक कृष्ण थे और कुरुक्षेत्र जीत लिया. आपके साथ आप ऑनलाइन शुरू कीजिए, देखिए आपके स्वरूप में कितने कृष्ण आपके सामने हैं. Now, at this moment, 95 online and many of them on YouTube. इतने कृष्णा है तो ये अर्जुन ये जंग जीतेगा कि नहीं जीतेगा? Will he win or not? Secondly, I started doing it, and yes, and I started doing that, and believe me, I am telling you, the first day I realized, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो पहले दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं नहीं बोल रहा हूं. I am not saying anything. Some unique power is using my body and my voice to reach to you all. And believe me, I am telling you that. It is happening. सभी लोगों, most of you all thought, no, I want to learn Sanskritam one day or the other. I should have a good chance. I should have a good chance. Arey, you wrote a postcard to Ma Saraswati, and Ma Saraswati delivered it to me and said, as a postman, start delivering the postcard. So I'm just a postman in front of you. I'm just a postman. So don't thank. Do you ever thank your postman for delivering you a letter? You might be, you must not be knowing his face also. आप उसका चेहरा भी नहीं जानते होंगे. मैं तो एक पोस्टमैन हूं.
इसके लिए इतना धन्यवाद मत कीजिएगा। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप लोगों के दिल की इच्छा थी कि आपको संस्कृत पढ़ना था, इसीलिए आप ऑटोमेटिक जुड़े। जैसे मेरे साथ हुआ था वैसे ही आपके साथ हो रहा है, आप जुड़े और मां सरस्वती ने ये शरीर और ये आवाज के माध्यम से आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने का दायित्व यानी पोस्टमैन मुझे बना दिया। मैं एक सन्यासी आदमी हूं, लिटरली आई एम सेइंग। भले मैं फैमिली में रहता हूं, I stay in my flat and everything. I have my car, I have my bike, everything. But सोच और my way of living is absolutely सन्यासी। हाँ, ये सन्यासी थोड़ा अलग है, भगवा पहनेगा लेकिन टी शर्ट पहनेगा, है ना, जीन्स के साथ भगवा टी शर्ट पहनेगा। अलग अलग तरीके से हम आपके पास आएंगे। So now there are not only live sessions that are going on. In between the sessions, you will be getting the links of our website, of our OTT channel, of our podcast, Spotify में audio podcast, Facebook link live, सभी जगह पे. Will you give me any reason that I cannot learn Sanskrit or I did not have an opportunity to learn Sanskrit? इतने दरवाजे अगर खोल दूंगा तो आप लोग बोल पाओगे कि मुझे मौका नहीं मिला? यहां पे filling up the form was your will. Stop learning Sanskritam will be my will. आप छूट नहीं सकते. Till the time you do not really understand Sanskritam, the bare course of Sanskritam, the bare root of Sanskritam, till the time you do not understand that, you can continue attending these lectures every month. That is the reason, do not quit the group. Because message will come on the group about the next lectures. That's how our past students have joined. And many of them have purposely joined on YouTube. ताकि आप लोग यहाँ पे interact कर सकते हो. You heard Ritika saying just now. Or Ritika, I tell you one thing very frankly. The moment I saw your name, I was really thankful to Maa Saraswati. क्योंकि लास्ट की जड़ी बूटी बाकी थी आपको पीने की. तो what is there? And am I teaching you Sanskrit? Maa Saraswati is also not teaching you Sanskrit. What she told me, through me, what she says, अरे संस्कृत is in Indian DNA. हमारे खून में संस्कृत है, हमारे DNA में संस्कृत है. So what I am doing? I am just churning out that Sanskrit within you. आप अगले 12 दिन देखोगे कि आप महसूस करोगे कि हाँ ये तो मैं जानती थी या जानता था. That is churning around. How many of you all know the incidents of this, what we call it? Sorry, I lost the link. जो पर्वत को ये किए थे, अमृत मंथन का. अमृत मंथन का सभी लोगों को परिचय है. Absolutely, everybody are absolutely aware. So there came a point, apart from other jewelries and everything coming out of the sea, after that came a kalash. अमर होने का कलश आया. देवों ने पिया, है ना, थोड़े बहुत दानवों ने झूठ मूठ पी लिया. उसके बाद the kalash was transferred to the subdivision of gods, and after that the rest of the kalash was passed on to ऋषि मुनीज. हमारे जितने भी ऋषि मुनीज है उनको पास ऑन किया गया. वो जब कलश पास ऑन किया तो ऋषि मुनि basically they are sannyasis. They don't do anything for them. For them the world is their family. So they thought, irrespective of people, that they are good or bad, let me distribute this beautiful Amrut to everybody. And when you see into the kalash of Amrut, you will find Sanskritam. That was the Amrut. It has the power
Many things are associated with Amrutam, with Sanskritam. That always I call it Amrutam. Because I have realized that it has changed my way of thinking. It has changed my level of acceptance. It has changed my behavior altogether. And people are saying you have changed according to your talks and personality as well. I have not done anything. Whatever was done by Sanskritam. So why are we searching this Sanskrit in some text? Why are we searching this Sanskritam in Veda, Puran, Upanishad? Do you think it is an Asian language? No, it is the most modern language. How? We have heard that computer programming is done in Sanskritam. Arey, no, dear, that's rubbish. It is not done in Sanskritam. It is on the basis of Sanskrit grammar. But when it has gone into the next level and all that, जो हम आज video accept कर रहे हैं, our generation have seen a telephone, trunk call, we used to dial trunk call and loudly we used to talk on phone. Thereafter, there were normal phones. STD came. Thereafter, there were research and residential phones. Then there was codeless phones. Then came mobile. And now the world is in mobile. Don't you feel so? This generation has given you this. So it is the responsibility of this generation to give you Sanskritam, return you back the Sanskritam as well, which you already have. आप लोगों के पास है मेरे भाई बहनों, आप लोगों के पास है. आप किधर इधर आए वेदशाला में? फॉर चर्निंग. आप मंथन करने के लिए आए और मेरा दायित्व है कि आपको संस्कृत आपके जो शरीर में है उसे बाहर निकाल के आपको रियलाइज कराना. Am I clear? So don't thank me. Some people call me sir, Guruji, Acharya. अरे क्या क्या बोलते हैं पता नहीं है. I'm not of that level. मैं तो एक ग्वाला हूं. I am just that cowboy who is churning the milk to form butter, to bring out butter from you all. But there are conditions. What are the conditions? You have to believe yourself, number one. Number two, for next another till the workshop is over, do not Google anything. बहुत लोगों को आदत रहती है कि Google is the university, but that is going to create a problem as far as understanding Sanskritam is concerned. I'm making it very clear to everybody. Because Western world doesn't want this awareness. They don't want this awareness. As you go ahead, you will realize, tomorrow itself you will realize that a beautiful aspect has come out into Sanskritam, just in alphabets. Yes, just in alphabets. But we are going to learn according to the science. हम विज्ञान को समझ के चलेंगे. विज्ञान के सिवा ये भाषा को समझना ही मुश्किल है. क्या कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हाँ, भगवान बोले. अरे भगवान का तात्पर्य क्या था वो तो समझिए. What was the essence behind that? And it is my personal opinion. I am not challenging anybody. No authorities I am challenging. मैं खुद ऐसा समझता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता was communication, samvad, or rather mouth-to-mouth communication between Arjun and Bhagwan. Am I right? It was just a communication, question-answer session. And do you mean to say that Bhagwan was answering or Arjun was questioning in a poetic form? In a literature and a poetic form? How it is possible? It is not possible. Shloks written in Srimad Bhagavad Gita are in poetic format. They are not in Sambhashan format at all. अरे भगवान केवल कर्मम करो तू, फलस्य इच्छाम मा करो तू. That must what was the communication. And after hearing that, Maharishi Vedvyas said, oh my God,
the Bhagwan has opened up the treasure by which the mankind can gain beautiful things. His mental attitude, the thinking procedure, because whatever is happening over here. It starts here and then it comes physically. It starts here. जैसे आप लोगों के दिमाग में अभी आया, just now everybody realized कि I want to learn Sanskritam, and you got the way, and here we are physically interacting with each other in Sanskritam. Am I right? Just imagine what made you come here. Why was that? What made you come here was your thinking that made you come here. And what I am delivering is the Adesh of Ma Saraswati to you. I am just a mediator, intermediator. Now, as I said, you have to continue till the time you are not really comfortably sambhashit. Means you are comfortably, you start thinking in the language of Sanskritam. Yes, you will master a language once you start thinking in that language. जिस भाषा को आप महारत तब प्राप्त करोगे जब उस भाषा में आप विचार करना शुरू करोगे. ज्या वेळेला तुमच्या डोक्यात ती कल्पना आली आणि त्या भाषेत तुम्ही जर विचार केला तरी ती भाषा सरळताની બહાર येते. એ જ પ્રમાણે એ ભાષા તમે જે રીતના વિચાર કરો છો ભાષામાં એ જ ભાષા તમારા મુખમાંથી નીકળે છે. That is how you learn language. Now you tell me one thing. Plane हवे में उड़ता है ना? Does plane fly in air? Yes or no, please? Anybody? Yes. It's common sense. It flies in air. When it is flying in air, why they need wheels? तो पहिए की क्या जरूरत है? Because it is flying in air, and in air wheels will not work. Then why it is attached in a plane? Because it has to create the momentum. So ये वर्ग, this particular workshop is a wheel of creating a momentum of you everybody towards Sanskritam. And once that speed is picked up, you will automatically be airborne. आप अपने आप आकाश को छू लोगे. कोई रोक नहीं पाएगा आपको. हाँ, आप में से कितने लोग हैं कि ये दिखावा करने के लिए आए हैं कि मैं संस्कृत सीख रही हूं, मुझे संस्कृत में बोलना आता है, पता है मैं इतनी स्कॉलर हूं, मुझे संस्कृत आता है, मुझे भगवत गीता कंठस्थ है. शो ऑफ करने की लैंग्वेज नहीं है. दिस इज नॉट द लैंग्वेज, बिकॉज संस्कृत डज नॉट सपोर्ट कंपैरिजंस. भला उसकी खमीस मेरे खमीस से सफेद कैसे? Neighbors envy, owners pride. These are the concept of Western world, not of Indians. We Indians say Vasudeva Kutumbakam. That's the reason we say it is a Deva Bhasha. Deva Bhasha means what? Deva Bhasha यानी क्या हुई? जो भाषा में भगवान बात करते हैं, नहीं, वो भगवान है, वो आपकी भाषा जानते हैं, उसके लिए संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है. परंतु the language in which, वो भाषा में, which was first formed in the world, and that spread all around. And with the branches coming out came the various other languages. Some came without the support of Sanskritam and became ultimately a language to bani. It became a language, but it became only a communicational language. Sanskrit is an emotional language. आत्मनिपद, अंदर की भावना को व्यक्त करने के लिए संस्कृत is the best language. So when there was Srimad Bhagavad Gita going on, Maharishi Vedvyas saw such a beautiful thing. Now let me write it down and pass it on to the next generation so that they can improve their lives. But then the experience of Ramayanam उसके पहले लिखा गया था. And in that there are 24,000 shlokas. 24,000 shlokas. So as a result, the whole
Ramayanam was split in various chapters, so that you won't find anybody with knowing all the 24,000 shlokas in one stroke. Kanthastha hona, by heart hona, impossible. There might be some 1 or 2 people. मैं ना नहीं बोलता, 1 या 2 व्यक्ति हो सकते हैं, मेरे संपर्क में कोई नहीं आया, लेकिन but there are millions of people who have by hearted the Srimad Bhagavad Gita. Why? Because there are only 700 shloks. Arey, my dear friend, when it was a samvad between Arjun and Krishna, भगवान के साथ जो संवाद था, वो संवाद के बीच में it must have taken minimum 11 days to complete that. And to compress that thing, Maharishi Vedvyas used the science and technique and grammar of Sanskritam, and that's how he started compressing it. दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए, और संधि विच्छेद अलग अलग स्वरूप लेते हुए, समास वगैरह स्वरूप लेते हुए उन्होंने श्लोकों की रचना की, और इस तरह से 700 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता खत्म हो गया, जो आज लाखों लोगों के कंठस्थ है, which is the language that million of people have by hearted, all the shlokas, because it was only 700 shlokas. One of us is with us. उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ है जिनको कंठस्थ है. लेकिन ये कंठस्थ होने के प्रोसेस में 700 श्लोक, do you all know the background of Kurukshetra was defined only in one shlok? It was compressed to only one shlok. Which was that shlok? The first shlok. Dharma kshetre Kurukshetre samvetaha yuyutsavaha mamakaha pandaveshchaiva kim kuruvanta sanjayah. mamakaha pandaveshchaiva, यानी आप आपके फैमिली में डिवीजन लेके आए. You brought division in your own family. Obviously, there is going to be a Kurukshetra. Without saying. That was the essence of in only one shlok. And the total summary of Srimad Bhagavad Gita is only one word. Can anybody define me that word? किसी को नहीं मिलेगा. The first alphabet of the first word and the last alphabet of the last shlok. First alphabet of the first shlok. नमस्कार सर. हाँ जी ओम जी, प्लीज बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ. धर्म धर्म. हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ ना. आप लेंगे क्लास? The first alphabet of the first shlok and the last alphabet of the 700 shlok, both together, dharmam. Dharma nahi tha, mere bhai, dharmam. And dharmam means truth, satya in Sanskritam. It does not mean Hinduism, Christianity, Muslimism, या Muslim, या Christian, ये अपना Buddhism. ये isms वगैरह, they came only 2,500 years before. Not that. But Sanskritam was there since last 15,000 or maybe 20,000 years ago. So till that time, it was culture, and that is what we call it. When we say Sanatan Dharma, does that mean Hinduism? Sanatan Dharma means Sanatan means perpetual, यानी हमेशा के लिए, जिसका अंत नहीं है वो. धर्म यानी सत्य, यानी perpetual truth is the meaning. And we start manipulating our brain. The original Bhagavad Gita, if you pick up from anybody, it will be only this thin, hardly 70 or 100 pages. Go through the translation, go through the essence of it, you will find volumes. Why? ऐसा क्यों? इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें क्यों अनुवाद में? क्योंकि अरे हिंदी में अनुवाद भी इतनी मोटी? हाँ, क्योंकि संस्कृत के 2 वाक्य आपके लिए 2 पन्ने के बराबर है. The translation of one shlok in Sanskritam can be expressed in 10 pages in English. That's the reason it has a volume. And even then, the real essence is lost. Why? Because their dharma is said, our Hinduism.
Why so, my dear friends? भाषा को तो कम से कम पॉलिटिक्स से बाहर रखो. हाँ, let us do that. If say for example, if I need blood, if I met with an accident or whatever illness and I have to transfuse blood into me, whether I'm going to say कि नहीं मेरे को हिंदू का ही ब्लड चाहिए, ब्राह्मण का ही ब्लड चाहिए, ऐसा बोलूंगा मैं? अरे भाई, ब्लड जो मिल रहा है लगा रहे हैं. क्या इंसान में परिवर्तन होता है क्या? So here we are not going to teach any religious things. No, I am against that. If you want to really believe what our Vedic culture has taught you, Vasudeva Kutumbakam. The whole world is one single family. It has to be. It is a simple logic. It is a logic. And that logic will be proved within this 10 days. Now when we say Deva Bhasha means we are finding God in each and every person in front of me. I find God in all you, all 90 of you all. ऐसा ऐसा कम होते जा रहा है. जाने दीजिए. ये विंडो शॉपिंग के लिए जो लोग आते हैं ना, उनके लिए मैं धन्यवाद कहता हूं. And by the end of our workshop, you will realize that only those who are really caring for our Sanskritam are there in the class. The rest of them have already left. या तो बोलेंगे YouTube से देखेंगे. But in any case, that is not going to demoralize me. मुझे वो कोई हानि नहीं पहुंचा सकते. मैं निरंतर शुरू रहूंगा क्योंकि मुझे पता है ये संघर्ष है. It is a संघर्ष. It is a Kurukshetra for me. And with most of you all, जो हमारे साथ अभी तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी तो मेरे सपोर्टर है भाई. हाँ, उनको कैसे भूल जाऊं? और सबको एक साथ मिला दो तो आपको भगवान का विराट स्वरूप नजर आएगा. एक दिन वो पछताएंगे जो छोड़कर गए. फ्री में था. अंग्रेज आके डॉलर्स में पेमेंट लेते तो हर एक लेक्चर के नोट्स बनाते, लोगों को बताते मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं. लेकिन यहां पे शर्म आ रही है लोगों को बताने के लिए कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं. Why so? So that way, do not misunderstand Sanskritam and do not try to find Sanskrit in textbooks, in books. आंकड़ों में, अक्षरों में आप मत ढूंढिएगा. हाँ, जिनका अभी माइक ऑन है, Vivo 1814, जिनका माइक अभी ऑन है, उनको मैं निवेदन कर रहा हूं कि कल आप नाम चेंज करेंगे, वरना मैं आपको बिना वार्निंग निकाल दूंगा अगर वीवो नाम हुआ तो. ओके, प्लीज. तो प्लीज ये समझने की कोशिश कीजिए कि संस्कृत जीना पड़ेगा, संस्कृत सीखना नहीं पड़ेगा. दिस इज द लेक्चर नॉट टू टीच यू संस्कृत बिकॉज यू ऑलरेडी नो संस्कृत. यू हैव टू लिव संस्कृत. यू हैव टू लिव. It is a culture that you have to live. और वो कल्चर कैसे बना, कैसे फॉर्मेट हुआ? And as we said, it is the Asian language. Sorry. हाँ, मैं देव भाषा की बात कर रहा था. देव भाषा means every person that is in front of us, our Vedic dharma, our Vedic culture, they think that there is a God in the front person, whoever is that. So देव भाषा क्यों पता है? क्योंकि ये दुनिया में there are specially abled people, there are all sorts of people, नेत्र बाधित, कर्ण बाधित, मुख बाधित, अंग बाधित होते हैं ना. Yes, this is the world's first disabled, enabled language. ये ऐसी भाषा है जो ये डिसेबिलिटी वाले भी सुन सकते हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. I will prove it. I will prove that. तो हम अपने लिटरेचर को ढूंढने के लिए अगर जो लोग यहां पे जुड़े हुए हैं, आई विल नॉट बी टीचिंग दैट. लेकिन अगर संस्कृत को समझना है तो ही वो ग्रंथ को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे. Then only you will be able to understand. There are many unique things in Sanskritam that you will be surprised. And it is the most modern language. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में द प्रोग्रामिंग
is totally based on Sanskrit grammar, not on Sanskrit language, on Sanskrit principle, grammar principles. One of our participants is a scientist, is a research scientist in that 7th and 8th generation computer. और उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम भेजा था, 11 पन्ने का प्रोग्राम था. Somewhat I know programming, so I could understand. I said, I read the programming. I said, I understood the program and what it will execute on the screen, I could understand. Well, sir, the 14 pages program I rewrote in applying my Sanskrit principles, grammar principles, and it ended up with only 11 lines. यानी 14 पन्नों का जो एक प्रोग्राम था, वो संस्कृत के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, उसके व्याकरण के सिद्धांत के आधार पर जो प्रोग्रामिंग किया गया, वो केवल 11 लाइन का था. आप समझ सकते हो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाय जिनी करके हम जब भी बोलते हैं और वो आपको रिप्लाई करती है, एक मशीन आपको रिप्लाई करती है, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग बिहाइंड दैट? तो डू यू अंडरस्टैंड, जो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लॉन्च होगा, इट विल बी लॉन्च बिटवीन 2030 से लेके 2050 तक. हाउ मच अपॉर्चुनिटी डज द इंडियन यूथ हैव इफ दे लर्न संस्कृत एट द राइट टाइम? कितनी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? वी कैन रूल द प्लैनेट, और रादर वी कैन रूल द कॉस्मोस. हम पूरे ब्रह्मांड पे राज कर सकते हैं, क्योंकि हमें संस्कृत गड़ा हुआ है. वी हैव संस्कृत विद इन अस. वी हैव नॉट टू बाय संस्कृतम. तो अभी कल के अटेंडेंस पे पता चलेगा कि कितने लोगों को संस्कृत जीना है और किन किन लोगों को संस्कृत पढ़ना है. पढ़ने के लिए बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, जीना है तो वेदशाला है. Because every aspect will be taught with logic, with science and with maths. उसके आधार पर. सब तैयार हो? क्या लगा? अर्जुन एकदम बोल बच्चन है ना, हमारे बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं बोल बच्चन. But we will have in between, we will be having jokes, light interactions and all those things, because मुझे वो पूरा मॉड्यूल को स्लो डाउन करना है. बोलते हैं ना, जब दाल उबलती है तो बाहर ना गिरे, उसके लिए चमचा अगर बीच में डाल देंगे तो दाल बाहर नहीं गिरती. एम आई राइट? कोई लेडीज, एम आई राइट विथ माई नॉलेज? यस सर. यस सर. तो ये चमचा डालने की बात है. तो बीच बीच में हम लोग स्लो डाउन करेंगे, जोक्स करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे. हमारे बहुत सारे अन्य जो रिपीट स्टूडेंट है उनको अनुभव है, उमा खास करके उनको अनुभव है कि बहुत टांग खींचता हूं मैं. लेकिन दैट इज जस्ट अ फैमिली रिलेशन, नथिंग पर्सनल. नथिंग पर्सनल आउट ऑफ दिस, नथिंग पर्सनल. शुद्धता के साथ हम पढ़ेंगे, अच्छे माहौल में पढ़ेंगे. और ये क्लास कंटिन्यूस है. नंबर ऑफ टाइम यू कैन रिपीट, number of time you can repeat, or how long it will go. I am going to live another 200 years. Am I right? तो 200 साल तो हर महीने होगा. पर्याप्तम, इतना इनफ है आप लोगों को? ब्यूटीफुल. हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे. Now I give you one simple example, जो मेरे personal life का example है, where my actually in my life, my mother was my philosopher. She has molded me. Every mother molds the child. इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्भवती है. She is expecting beautiful gift of God very soon. और उनकी तैयारी कर रहे हैं with Sanskrit learning and all that. Yes, they are right. They are right. ये ज्ञान जाता है उनको. लेकिन ये एक माँ ही ऐसा सोच सकती है. दैट इज द रीजन थ्रू आउट माई कैरियर इन टू दिस टीचिंग संस्कृतम आई हैव सीन कि मैक्सिमम अटेंडेंस आर फ्रॉम द लेडीज, नॉट फ्रॉम द मेन. दे आर नॉट इंटरेस्टेड.
अरे छोड़ यार, ऑफिस के इतने झंझट में मैं ये सब क्या करूं? ये क्या मेरी उम्र है ये सब पढ़ने की? अभी ये इस उम्र में मैं क्या पढ़ूं? उससे अच्छा टीवी पे छैया छैया देखूं, है ना? और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे क्या क्या देखते हैं पता है, यूट्यूब पे भी क्या देखते हैं पता है. Then how you are going to pass on the good culture ball to your next generation? You are not going to. Just now Dr. Patel just now said that they are more concerned with their grandchildren. There is one another parents, he has twins. हम लोग सबने सुना. They want to impart that thing. So for that they require a platform. और किसी को भी आई विल नॉट नाराज नहीं करूंगा, मैं किसी को हताश नहीं करूंगा. दैट प्लेटफॉर्म विल बी देयर. सो मोस्टली व्हाई लेडीज टेक दैट थिंग सो इंपॉर्टेंट, लर्निंग अ लैंग्वेज. व्हाई द लेडीज आर सो मच इंक्विजिटिव अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू? यू नो द रीजन? बिकॉज जननी है वो, दे आर द क्रिएटर्स एंड दे हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड एंड मेड हिम टॉक what they are talking now. My mother has made me talk. So for me, my mother is so important. Equally, all the ladies of the world are wonderful gift of Brahmaji. Without that, the world would have been रूखा सूखा or rather illiterate या बिना ज्ञान का होता. इसीलिए लेडीज ज्यादा पार्ट लेती है क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा पढ़ाई है. शी हैज टॉट, द मदर हैज टॉट द मदर टंग टू द चाइल्ड. शी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज. वी men don't know the importance of it. We want to learn because of something, because we are retired or because we have some other motive. That motive is right. That is nothing wrong in that. But otherwise, nobody is so much interested to go into Sanskritam. As a man, definitely. Even before 2016, even I was not interested. आपको एक बात बता दूं मैं, मुझे काफी लोग बोलते हैं कि भाई, means after my mother's death, I had decided to go on a sannyas. Means to wear that shawl and to stay away from the family and all that. योगी बनने का मैंने सोचा था, तो योगी बन जाता हूं. I visited Haridwar. In that one place, that महाराज कंधे पे हाथ रख के बोले कि महोदय, आपकी निर्मिति का कारण कुछ और है. Your birth is for some other reason. So this is not suiting. So don't become yogi, become upyogi. तो योगी मत बनो, उपयोगी बनो. Don't become a yogi, be a useful person. That's how this has turned my life as well. Now talking about my mother as a philosopher, last में, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा समय हो गया ये तो, आप लोग बताना चाहिए. I'm sorry. We will talk about that tomorrow. I end my session over here. धन्यवादः, शुभ रात्रि, शुभम भवतु. यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ. And शुभ रात्रि sir. Yes, I will end the session over here. And YouTube वाले सभी